Hi students, I am extremely pleased to announce the launch of Hot 500, that is history option through 500 questions for 2026. The program is going to launch on the 8th of September 2025 and we are going to cover the entire syllabus of history optional in question and answer format by covering more than 500 questions plus a number of PYQs. So 80 lectures, roughly 3.5 to 4 months. We are going to be done with the entire syllabus. The program is not simply a classroom program, rather it is an integrated classroom and test series program. So apart from these 80 lectures, we are also going to be conducting an 8 test series having 6 sectional tests and 2 full length tests at the end. Now 6 sectional tests, that is one for ancient India, one for early medieval India, one for medieval India, one for modern India, one for post-independence India, and the 6th one for world history. Correct? Now, who is this program for? This is a much more advanced program as compared to Sunday Live, and it is for those candidates who have either done their foundation from Level Up IAS or maybe from somewhere else, or have at least conducted one thorough reading of the relevant course material, right? तो एंशंट के लिए मान लीजिए उपिंदर सिंह पढ़ा हुआ है या फिर आर एस शर्मा पढ़ा हुआ है, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मे बी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय और विपिन चंद्रा यू हैव ऑलरेडी रेड, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लो, एल मुखर्जी एटसेट्रा यू हैव ऑलरेडी रेड. तो आपके लिए है ये. फॉर दोज who have not covered history optional from anywhere, who have never appeared for the mains paper, it is not for them. यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट कैसे किया जाएगा, that we are going to cover roughly 10 to 12 questions per day, and in the classroom, out of these 10 to 12 questions, 3 or 4 questions I'm going to give you an opportunity to write live in the class, and then immediately after that discuss it. Another 4 to 5 questions apart from the ones that you have already written, we are going to discuss live in the classroom itself, and bache hue 2-3 questions I'll be giving you for homework, right? So in this way we are going to be covering we are going to go through one topic after the other in question and answer format. Now that obviously requires that you should at least have some founding of knowledge in that topic. So apart from what you have already covered, I won't expect कि आप कुछ नया पढ़ें, but for those who do not have collectivized notes or who have a problem of sprawling notes, कि एक टॉपिक उन्होंने एक जगह से नहीं कवर कर रखा है, 5-6 जगह से कवर कर रखा है, and they do not have single unified notes, उनके लिए we have also included our own Level Up IAS History Optional Foundation notes in the program itself. So you'll get access to all these notes from day one. So either you can revise your own notes before coming to the class, or you can go through our notes and then you can attend the class to maximize your own experience, right? What are going to be the focus areas? First of all, we are going to do complete topic wise and thematic coverage of the entire syllabus. So by the time we are through with the first section, that is ancient India, you are going to come away with the feeling कि हाँ अब मेरा पूरा syllabus cover हो चुका है. There is not a single area of the syllabus including the outlandish type questions जो कि मैं tackle नहीं कर पाऊंगा. तो हमारा focus इसके ऊपर होगा कि complete coverage हो जाए all the themes. Further, all the important PYQs and many more practice questions are going to be covered. Now, if you look at the collection of PYQs over the last 30-40 years, so more than 1,000 PYQs have been asked. But if you were to distill them down, you will realize कि 400 PYQs करने से more than 90% of the syllabus gets completed, क्योंकि repetition बहुत ज़्यादा होता है. Either directly questions repeat हो जाते हैं या फिर similar questions are asked every year जो कि PYQs से ही derived होते हैं. तो वो PYQs cover करके हम पूरा syllabus complete करेंगे. Also, there are many areas which the UPSC has not touched yet, but which appear to be extremely important. We are going to include a number of practice questions from those topics as well, right? Focus is going to be on analytical and conceptual understanding. History is not simply a collection of facts. It is also about argumentation. It is also about
analysis. तो facts versus arguments में correct balance होना चाहिए. Causation is going to be very important. The study of history is actually the study of change, right? वो change में not only chronology and facts are included, but also motivations and effects. Cause and effect are also associated. That is going to be a very important area of focus for us. Then we are also going to focus upon learning answer template creation. Now, यहाँ पर this is going to be a very rewarding exercise which we are going to engage in every day. So whenever we are encountered with a question, तो 10 or 15 or 10 or 12 questions we are going to be covering every day. तो जैसे ही एक नया क्वेश्चन आता है, फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू डिकोड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? Then we are going to start thinking about, start ideating कि अच्छा ये डिमांड्स हैं, इनको फुलफिल करने के लिए व्हाट इज द कंटेंट दैट आई नीड टू मार्शल, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई नीड टू कलेक्ट, जो कि मैं आंसर में लिख सकता हूँ. हैविंग डन दैट, हाउ टू अरेंज द कंटेंट इन ऑर्डर टू बेस्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हैविंग डन दैट, कि किस नोट पे शुरू करना चाहिए, किस नोट पे खत्म करना चाहिए. तो आपके आंखों के सामने, वर्किंग विद यू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल आंसर. एंड यहाँ पे ही सबसे ज्यादा एनरिचमेंट होता है, बिकॉज अभी तक what you have been doing is passively absorbing all the information. You have not, you can say, forced yourself to apply that information, apply that knowledge in a manner which is going to lead to tangible results. So we are going to do that live in every class. The classes are going to be interactive. I'm not going to be only lecturing, rather I would want some inputs from you, because it is from your inputs that I'll try to craft many of the answers. And then we can see how, using the information that you already had, we can actually elevate the level of the answers, right? Now, obviously we are going to provide detailed model answers for each and every question, but मेरा focus इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता, because I feel that model answers can be a bit counterproductive. They have a tendency to stifle your own creativity. हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है कि एक ही मॉडल आंसर पॉसिबल हो सकता है. तो इट इज बेस्ट टू थिंक ऑफ approaching the history optional paper or any humanities paper as if you are a boxer. तो जैसे boxers को train किया जाता है to always remain on their toes so that they can weave and duck out of the opponent's punches. यहाँ पे भी आपको एक बहुत फ्लूइड फ्लेक्सिबल अप्रोच लेना चाहिए. यू शुड नॉट बी वर्किंग इन अ वेरी रिजिड मैनर कि हाँ ये क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक मॉडल आंसर है, मुझे केवल यही याद कर लेना है. दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. We are going to have a great degree of focus upon historiography. History optional without historiography is not possible. लेकिन लोग हिस्टोरियोग्राफी को थोड़ा मिसरीड करते हैं. देयर आर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट हिस्टोरियोग्राफी. ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब कि आंसर में कुछ हिस्टोरियंस का, प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस का नाम स्प्रिंकल कर दो तो वो हिस्टोरियोग्राफी हो जाता है. बट दैट इज नॉट द केस. Historiography is actually the perspective that these historians bring to any field of study or bring to any topic or theme of history. उन्होंने बोला क्या है, that is more important than what is the names of the historians. Now, अगर हम मान लीजिए 700-800 questions कर रहे हैं, तो we are going to encounter the names of various historians, roughly 60 to 70 historians in half of these questions. तो 400-500 questions में historians के नाम आएंगे ही आएंगे. एंड अगर हम इतने ज्यादा हिस्टोरियंस, इतने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी दैट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एटलीस्ट द मोर प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस एंड एटलीस्ट द मोर इंपॉर्टेंट डिबेट्स. तो वो आपको याद हो जाएगा. बट चीज ये है, इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है दैट what they have said is much more important than the name of the historians. तो there may be a possibility कि आप एक आंसर लिख के आ रहे हैं जिसमें कोई भी हिस्टोरियन नहीं लिखा हुआ है, बट इट इज स्टिल फुल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. और दूसरा भी पॉसिबल है कि आपने हिस्टोरियंस के नाम तो लिखे हुए लेकिन हिस्टोरियोग्राफी नहीं लिखी हुई है. तो करेक्ट फोकस, अपडेटेड हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस फॉर अस. And then finally, as I informed you in the beginning itself, it is a classroom come test series program. So we have six sectional tests and two full length tests to be conducted at the end. There are two other components जो कि यहाँ पे available नहीं है. We have included a separate mapping module with a full-fledged printed book that you are going to be provided as soon as the examination gets conducted, and we release a new edition of our mapping book. तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. It is included with the program, and
for those candidates who feel especially anxious about historiography, although it is going to be woven throughout the program into all the questions that we discuss, or at least most of the questions that we discuss, हम लोग एक अलग से हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर फोकस करते हुए एक मॉड्यूल इंक्लूड करेंगे इसमें, इन विच यू आर गोइंग टू गेट नॉट ओनली सेपरेट नोट्स फॉर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डिबेट्स, बट ऑल्सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन से हिस्टोरिकल डिबेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय सीइंग हाउ फ्रीक्वेंटली दे हैव अपीयर्ड इन द PYQs. साथ में इसके ऊपर लेंदी डिस्कशंस भी होंगे. आई प्लान टू कवर द एंटायर हिस्टोरियोग्राफी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल इन अनदर 10 to 15 रिकॉर्डेड वीडियोस. तो वो आपका एक बार ये मेन कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा. तो फॉर दोज हु फील एक्सेसिवली एंशियस अबाउट हिस्टोरियोग्राफी, उनको ये फीलिंग है कि मुझे हिस्टोरियोग्राफी पे कमांड एस्टैब्लिश करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दी रेगुलर कोर्स की पूरा रिवाइज करने से बजाय आप वो 10-15 लेक्चर्स को के ऊपर फोकस कर सकते हैं. जो हिस्टोरियोग्राफी का अलग कंटेंट है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं. तो इट इज नॉट दैट कि उसके बिना आपका हिस्ट्री का प्रिपरेशन पूरा नहीं होगा. इट इज जस्ट टू गिव यू दी रीएश्योरेंस कि हाँ, आपका हिस्टोरियोग्राफी भी अच्छे से कवर हो गया है, बिकॉज दैट हैज बीन अ मेजर डिमांड, राइट? The program begins on the 8th of September. I hope to see you there. Join us and level up your preparation. The link to the program is given in the description below. Thank you.